have the GCC installed, वहाँ पे आपका वर्जन नंबर वो सब चीजें वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए. If GCC is not installed, they have given as GCC is not the identified command or predefined command over here, or then they will give you the some link over there to download that GCC. तो sudo apt get install GCC simple link होता है, sudo apt get install GCC ऐसे करके एक they will give you one small command. Then after executing this command, same terminal में आपको उसको execute करना है, enter करके automatically within a minute or 2 minutes it will get installed in your Ubuntu machine. ठीक है? And once it get installed, you can again check with this command GCC, वहाँ पे version number आ जाएगा. Okay? After successful installation of GCC, then you have to save the program. जो भी आपने कोड किया है वो आप होम टैब में या फिर जहाँ पे भी आपका जो गैलरी जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो वहाँ पे आपको सेव करना है. एंड देन यू हैव टू रन दिस gcc space filename.c for compilation and gcc space filename for run and execute the code. But make sure that आपने जहाँ पे फाइल सेव की है उसी का पाथ टर्मिनल पे होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट आइडेंटिफाइड द फाइल. उसकी जगह पे आप फिर सिंपल आप होम में जाके होम टैब जो होता है होम डायरेक्टरी उबंटू में वहां पे जाके अगर बाय डिफॉल्ट जो टर्मिनल का पाथ होता है वो होम का होता है तो वहां पे जाके भी आप फाइल सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी फाइल का नाम है आप सपोज मल्टीप्लिकेशन कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन का नाम का आपको कोई फाइल है तो जीसीसी स्पेस मल्टीप्लाई .c. ओके, so this will compile the file for you, gcc file, and it will use some if error are there it will show error. अगर नहीं है तो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा, टर्मिनल आपका नेक्स्ट कमांड दिखाएगा अगर एरर नहीं हुआ तो. एंड नेक्स्ट कमांड में आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू राइट हियर जस्ट ओनली योर gcc space file multiple. Okay, in this way you will get the output of this file. Okay, okay. ओके, हैव गॉट दिस. ये सिर्फ उबंटू वाले सिस्टम के लिए है जो उबंटू पे यूज कर रहे हैं. एक दो स्टूडेंट के मुझे मैसेज आए थे सर वी आर यूजिंग उबंटू. आई थिंक ऑल क्लियर नाउ, यस और नो? ओके, you can raise your hand or you can put the message in the chat box. ओके, नेक्स्ट अभी आई थिंक ए डिवीजन के स्टूडेंट कम है तो सुबह जो हमने लिया था ए डिवीजन में आई विल रिपीट दैट फॉर both C and D division. So be careful, okay, and listen carefully. Okay, so I will sharing that notepad again with you. Now, what we are doing here is that we are installing the Visual Studio Code here, okay, and then WinGW. We are using this platform for coding right now. जिनके पास Windows operating system है उनके पास Windows या फिर Mac, ठीक है. So for installing the Visual Studio Code, you have to just go on their website, VS Code website, and download it. You have to download the VS Code website. जिन्होंने ऑलरेडी किया है डोंट वरी, बट जिन्होंने नहीं किया है जो बिगिनर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ. देन आफ्टर डाउनलोडिंग दिस VS Code, you have to install it. Okay, and after installation, you need to put some extension over there. Okay, so extensions कौन कौन से आपको करने हैं? फर्स्ट एक्सटेंशन है आपका C and C++ and सेकंड एक्सटेंशन है आपका Google. ठीक है, तो ये दो एक्सटेंशन आपको यू हैव टू install in this Visual Studio Code. Okay, so this is the first task you have to do with the VS Code. Okay, so I will just show you how to install that.
एक्सटेंशन एक्चुअली विजुअल स्टूडियो कोड तो आप कर लोगे, ठीक है। Okay. Now, if you are seeing this Visual Studio Code, I have this Visual Studio Code. Now, if you go in this left hand side, okay, panel, जिसे हम panel बोलते हैं या फिर task बार भी बोल सकते हैं. Now here extension is there. ठीक है, Control Shift X भी short form है. Extension पे when you go, you will see here that some extensions are already installed. Okay, are there. So you have to install from that. So first of all, C and C++ extension you have to install. Okay. So this is C and C++ extension. You have to just click over here and then you have to install the C and C++ extension. I have already installed on my laptop, so I don't need to install it again. Okay. यहाँ पे आएगा आपका इंस्टॉल बटन, तो वो क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो. विद इन अ मिनट और 2 minutes it will get installed. Next, second, which one? Code runner, right? So code runner. If you go on code runner, you have to install this with this help of this button, code runner. ठीक है. It code runner actually run used to run the program. Okay. तो VS Code में जब आप पहले इंस्टॉल करोगे वहां पे रन करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा, कंपाइल करने के लिए कोड को. So for that purpose you will require this second extension, that is the code runner, to run the code or to execute the code. तो ये हो गए आपके दो बेसिक एक्सटेंशन, ओके, which are available on the VS Code. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है. Who is this Gotia? Why are you commenting like this? मुझे चैट बॉक्स भी बंद करना पड़ेगा फिर वैसे. दिस इज द ओनली वन वे कम्युनिकेशन देन. कमेंट नहीं करना. मैंने क्या बोला, जितना पूछा जाए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है उतना ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे. दिस मीटिंग इज रिकॉर्डिंग. प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट. रिकॉर्डिंग हो रही क्लाउड के ऊपर डायरेक्टली. इट इज नॉट अ जोक गोइंग अराउंड हियर. If you're really matured and you know all these things, I know most of the student knows this thing from beginning. So they don't need to do this session. घर पे बैठो, अब मैं अटेंडेंस ले लूंगा आपकी, नो प्रॉब्लम. कोई जरूरत नहीं आने का ऑनलाइन. बहुत सारे स्टूडेंट जिनको पता नहीं है, जो बिगिनर्स है, उनको तो पढ़ने दीजिए एटलीस्ट. डोंट डिस्टर्ब. दिस इज द लास्ट वार्निंग फ्रॉम माय साइड, अदरवाइज आई विल अबॉर्ट दिस क्लास. ओके. VS Code, have you got all VS Code समझ में आया? Yeah, you have to give 2 extension over there. Okay. Next part is your compiler for VS Code. So compiler, MinGW compiler is there. You have to download that from MinGW website, source code website, and then install it. Okay. After installing it, you have to first of all give the path to the environment variable. Okay. So how to give the path to that particular environment variable? So you have to just go to that MinGW folder in C drive जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया होगा उसको. Then go to bin folder, then copy that path. Okay, जो bin का तक का path आएगा आपका, you have to copy that path and then go to your system properties. right click करी कीजिएगा आपके my computer को या फिर this PC को. After right click, last option जो होता है properties, वहाँ पे जाके you have to go to the properties and then environment variables. Okay, so once you search for the environment variable, you will get to know कि एक path वहाँ पे होता है. path नाम का एक folder नहीं, जिसे हम tab बोलते हैं. path, click on that path and put new path over there, right?
once you put the new path, then paste that copied path over here, जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था आपने, इसको आपको वहाँ पे जाके कॉपी करना है, जस्ट ओके करके वहाँ पे क्या करना है आपको, विंडो को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल इंस्टॉलेशन ऑफ GitHub। ओके, इज इट ओके? रिपीट करना है इसको, GitHub को एक बार, राइट? ओके, ठीक है। सो मैं आपको दिखाई देता हूँ वहाँ पे, मैं शेयर करता हूँ मेरा ब्राउजर डायरेक्टली। Just wait a minute. नहीं, नो शेखर, आई डोंट टेकिंग, बिकॉज 4 बजे मेरा मीटिंग शेड्यूल हुआ है आज, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का। तो आज तो नहीं, लेकिन कल सैटरडे को वो हम जरूर ले लेंगे, ठीक है, तो कल का क्लास बचा हुआ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए, जस्ट गो ऑन मीन्स GW डाउनलोड, गूगल पे जाके, तो सोर्स कोड .NET का एक वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग टूल्स का काम है उनका। जस्ट क्लिक ऑन दिस वेबसाइट, you will get this type of one website over here, minimalist GNU for Windows. Okay, minimalist GNU for Windows, and then in that you will get the file, download file. Click on this file, download. Okay. So it will give you one executable file, .exe file जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप मेरी इसमें डाउनलोड हो गई ये फाइल। Okay. Once you download this file, you just double click on this file, okay, and after double click this file, the next step मैंने आपको बोले हैं, ठीक है, you have to follow that step, okay, one by one, ठीक है। Clear everyone now? Yes, ठीक है। Next, I think all have got idea about first of all VS Code, GCC, one के लिए, then VS Code, and then for compiling in GW, ठीक है। So directly jump to the code। ये हो गया हमारा कोड, इसको हम क्लोज कर देते हैं। वन मोर थिंग, मैंने सुबह बोला था, उसमें मैंने एक नीचे टर्मिनल को ये करने की भी कमांड दी है, ठीक है, तो वो आप सब फॉलो कीजिएगा। इंटीग्रेटेड टर्मिनल को कैसे एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू डाउनलोड द VS Code एंड इंस्टॉल इट, तो इट इज नॉट फॉर द यूजर टू गिव इनपुट इन द टर्मिनल। यहाँ पे सिर्फ आपको आउटपुट का विंडो दिखेगा, ठीक है, टर्मिनल का विंडो यहाँ पे नहीं दिखेगा। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू enable or activate this terminal। Just how to activate this terminal? The steps are given in that notepad file। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। Just go to the file, then go to the preferences. After preferences, you have to go to the extension. Now see your extension. Once click on this extension. Okay. Sorry, just wait a minute. File, preferences, then sorry, settings. And in the settings, you have to search for the run code configuration। Once you are in run code configuration, then run in terminal। ये चेक बॉक्स पहले आपका अनटिक होगा, तो ये आपको टिक करना है, रन इन टर्मिनल, वेयर whether to run code in integrated terminal or not। You have to check this checkbox, tick this checkbox, and then okay, बाकी का कुछ भी नहीं करना है आपको, ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो क्लोज कर दीजिएगा, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस और नो? Just wait for a minute. I'm getting one phone call. Just wait for a minute. Sorry for the disturbance. Okay. So where we are presenting the just report, right? Okay. So now first, let's see the first program or see how to run this program in VS Code. Okay. So basic steps are there. For example, you want to open the first of all one program page, but before that you have to make some space for that particular program to store in your PC. So for that purpose, go to the file and then go to the add folder to workspace. This is your workspace. Okay, you are working here, so this is a workspace. So you have to add that folder to your workspace. Okay, so add folder to workspace. I click on this, add folder to workspace, and then this is the folder that I have created on desktop. Okay, so if you want to create in any dictionary directory, आपके पास जो है डी ड्राइव तो वहां पे जाके आप एक फोल्डर क्रिएट कीजिएगा, न्यू फोल्डर, वहां पे आपके सारे प्रोग्राम स्टोर रहेंगे. ओके, एंड देन सिलेक्ट दिस फोल्डर एंड देन प्लीज क्लिक ऐड. Means means you are going to add the programs files into that particular folder. Means whatever the programs you are making, okay, that all files should be get into one folder. Okay, so that is nothing but the adding folder to the workspace. Okay कीजिएगा, then your folder will be display over here. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मुझे सी नाम का मेरा फोल्डर है, उसके अंदर मेरे प्रोग्राम स्टोर हो गए वन बाय वन. ठीक है, तो फाइल ऐड फोल्डर टू द वर्कस्पेस, ये होगा एक. देन ऑन दैट फोल्डर नेम यू हैव टू राइट क्लिक एंड देन पुट न्यू फाइल. न्यू फाइल में आप जो भी आपका प्रोग्राम का नाम है यू कैन टाइप ओवर हियर. फॉर एग्जांपल फर्स्ट सी program dot c dots. Don't forget to put dot c, otherwise it will not create dot c file. ठीक है, simple file create हो जाएगा. Okay, so now see here, my first c program dot c file is ready over here. Okay, now here you have to write the code and then run the code from this button, और यहाँ से भी आप उसको start run debug कर सकते हो, या फिर directly run भी कर सकते हो. Otherwise you can click right click and then put the option as a run code over here. Okay, is there any doubts until now? Okay. Okay, ठीक है. So let's do one first simple program. मैंने एक यहाँ पे सुबह किया था हमारे लेक्चर में. तो hash include std.h, we have include one standard input file over here. This is a header file, right? Header file. Then main function, opening bracket and then closing bracket, and just we are just printing something over here. Hello, welcome to C programming. Hello, welcome to C programming. Okay.
You can type anywhere what any message you want to print over here, right? Then click write and then run the code. So once you run the code, you will get the output over here as welcome to C program. See here, this type of output you will get. If you don't have the GCC, अगर आपका वो MinGW का मैंने बोला अगर वो सक्सेसफुल सेटअप नहीं हुआ है, that means वहाँ पे एरर आएगा. GCC is not recognized as internal and external command. Okay, so for that purpose आपको GCC इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले. जो मैंने आपको बोला है ना MinGW, उसका पूरा सेटअप करने के बाद ही यहाँ पे आपको आउटपुट आएगा. ठीक है. So this is the first simple program for your C language. Okay, is this okay? I'm not audible properly. Hello, आवाज नहीं येते का माझा? ओके ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, इज दिस ओके? Yes, Shekhar, you want to ask something? Okay, ठीक है. Now, in this program we have seen only the print the message. तो एक second program भी हम देख लेते हैं. That is nothing but the display the some numbers on the screen on the terminal. Okay, तो हमने सिर्फ यूजर से इनपुट नहीं लिया. We have just print the text message. Okay, welcome to C program. But how to take the input? एक बार वो भी करके देखते हैं कि हमने इंटीग्रेटेड टर्मिनल जो चालू किया वो होता है या नहीं होता है. So for that purpose, I have taken we have taken new program here. Similarly, as into standard input.text header file हमने input किया है आपको main function. We have taken one variable, okay, which is of integer data type. Okay, in data type का एक variable we have taken. उसका नाम है number. Printf enter the number. So now here user have to enter the number. Okay, ये हो गया. User have to enter the number. Now after user entering the number, that number should be scanned by the compiler ना, उसको पता चलना चाहिए कौन सा नंबर एंटर किया. तो for that purpose you require one format specifier. Okay, format specifier हमने पढ़े already. इसमें first unit में %d, %n, %c, etc. तो format specifier %d, d ampersand number. This is your format specifier to scan this number which is entered by the user. The previous command. Okay. Display the output or this a message. You will add number and then return output to the user. ठीक है. तो अभी इसको मैं रन करता हूँ. एक बार देख लीजिएगा होता है कि नहीं होता है. तो enter an integer 69. टर्मिनल में क्लिक करना पड़ेगा. 69. You entered 69. Okay. Means this is working. फिर से एक बार रन करते हैं. मैंने टर्मिनल को क्लियर करवाया. रन कोड. एंटर एन इंटीजर वैल्यू आपको कोई भी एंटर 87. So enter. The number is 87. Okay. So this is the simple program for your hello.
इन द यूजर। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, एक बार फिर से रिपीट करूं इस प्रोग्राम को, रिपीट द प्रोग्राम। Listen carefully. First, you have got the first program correctly, yes or no? Just print the message. Okay. Now, in this program, what we are doing here is that we are going to take the input from the user. We are going to take the input from the user. So, for that purpose, we have included one file over here, header file. Then we have included one main function, integer main functions. Then we have declare one data type, which is of integer data type. वहाँ इंटीजर, बिकॉज हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है ना, अगर मुझे कोई फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू प्रिंट करनी है तो डबल वहाँ पे डेटा टाइप लिया हो। ओके, डेटा टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है असाइनमेंट में, वो अच्छे से कट कर लेना आप, तो आपको समझ में आएगा डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो इंटीजर नंबर एक मेरे वेरिएबल है जिसका टाइप था, टाइप है इंटीजर। देन आई हैव टू प्रिंट दैट नंबर, राइट? फॉर दैट पर्पस printf function हम use किया enter and integer. So once I have entered this particular value, enter and integer, then user have to enter the number. Okay, means user कुछ तो नंबर एंटर करेगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा। scanf %d and ampersand number. Okay, now what is this? This is nothing but the scan the input given by the user over here. For that purpose we are using here format specifier. Okay, for that purpose we are using here format specifier. Scanf %d ampersand number. And then after scanning the number, we are using, you enter the this format specifier and the scan and then enter out. ठीक है, और enter number थोड़ा सा इसको मैं अच्छा लिखता हूँ, जो number is this. ओके, क्लियर एवरीवन नाउ? समझ में आया सब? एक बार आउटपुट देखते हैं एक बार इसको रन करके। enter an integer 65, you enter number is okay. Have you got this now, yes or no? I think you got the idea. All the students, समझ से सके ना? Yes or no? Okay. Okay. If I entered the value, integer नहीं डाला तो क्या करेगा? क्या आउटपुट आएगा? If I have not put integer over here, then error आएगा आउटपुट में, क्या आएगा? ओके, वो भी
नेटवर्क स्लो है का मैम? हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? लाउड एंड क्लियर? ठीक आहे. सम नेटवर्क इश्यू आज सकाळपासूनच चालू आहे इकडे. सुबह से नेटवर्क प्रॉब्लम, फ्लक्चुएशन नेटवर्क में बहुत सारा. तो दैट इज व्हाई कुछ लेक्चर्स भी सुबह के आई थिंक ऐसे बीच में कट हुए होंगे. तो काम चल रहा है हमारे नेटवर्क लैगिंग या फिर इसका. ओके, रिपीट करूं, इस प्रोग्राम को रिपीट करूं एक बार फिर से. am I audible now? लाउड एंड क्लियर? परत लॅग होतो आवाज? स्टिल लॅगिंग? ओके. So let's do one thing. We will just wait for 5 minutes. ताकि देखिएगा नेटवर्क का अगर प्रॉब्लम होता है तो वेल एंड जस्ट wait for 5 minutes. Okay. I will just check with the network assistant. Just wait. Hello, am I audible now? Hello. Okay. परत लॅग होता आवाज? इट्स लॅगिंग अगेन? No? ठीक है. So let's see the program again, once again. Okay, so what we are going to do here is that we have to just take the input from the user in the terminal. Okay, so for that purpose, we are declaring one main function here and then one integer data type. Okay, integer data type हमने यहाँ पे declare किया है and then we have to print that particular number. Okay, this user have to print the number again and then read the number using the format specifier using %d over here. Okay, फिर से लैग हो रहा है आवाज? आप एक काम कीजिए, प्रोग्राम लिख लीजिएगा एक बार, ये कल हम फिर से देखेंगे. ओके, डाउन दिस प्रोग्राम. ओके, आज थोड़ा इशू है नेटवर्किंग का, तो हम इसको कल देखेंगे टॉपिक को फिर से एक बार. Just wait for a minute. Don't
लेफ्ट द मीटिंग, हमें अभी अटेंडेंस लेना बाकी है. ओके ठीक है. Okay, I have given one link, Google Form attendance link है. You have to just fill this form for your attendance, okay? And don't share other students जो घर पे बैठे हैं उनको शेयर नहीं करना है, सिर्फ आपने ये लिंक भरना है इससे, ठीक है? एंड टाइम वहाँ पे 3 PM डालना है, टाइम 3 PM, ओके? ठीक है. So in this way you will be able to fill this Google form. अटेंडेंस आपकी काउंट हो जाएगी वो. Okay, yes or no? वो आने वाले रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर सबमिटिंग टिल टू, आपका क्यों नहीं हो रहा है सबमिट? ऐसे ट्राई करो एक बार. Those who have given the attendance they can left the meeting. हाँ ठीक. आवाज लैग हो रहा है तो फिर हम कल स्टार्ट करेंगे कुछ. ठीक है. Those who have given the attendance they can left the meeting.